सारे रिपीटेड डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे. Individuals have a hard time getting rid of their material possession. Let's understand what anxiety disorders are. To the point रखेंगे so it's relevant to your exam. Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Welcome back to PowerWithinPsychology. I hope you all are doing well. Myself Alankrita Kaushal. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स फ्रॉम द DSM. तो अगर आप CUT PG एस्पिरेंट हैं, then stay tuned. But before we begin with our session, I would like to introduce you all to PowerWithinPsychology. So PowerWithinPsychology is India's leading mentorship and guidance platform for all psychology aspirants for the past 7 years now. PowerWithinPsychology offers various courses. Our AARAMBH Batch is for all those जो 11th या 12th में है and they wish to pursue bachelors in psychology. Our Lakshaya Batch is for all those who have completed their graduation and are targeting CUT PG या masters की और कोई entrance examination. Our Safalta Batch is for all those who are targeting MPhil or MA clinical entrance examination. Our Sankalp Batch is for all those who are targeting UGC NET JRF or GATE examination. Now, since this video is for CUT PG aspirants, I would like to introduce you all to our Lakshaya Batch. Lakshaya Batch में CUT PG के साथ साथ मास्टर्स की जितनी भी एग्जामिनेशन होती है उस सभी की प्रिपरेशन करवाई जाती है. लक्ष्य बैच का 2026 का सेशन स्टार्ट हो चुका है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डू कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर गिवन बिलो. As we all know, Diwali is just around the corner. So PowerWithinPsychology is offering up to 15% off on all our courses. So this is the perfect time to join and avail this offer. Let's start our session. जैसा कि मैंने बताया आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स डिस्कस करने वाले हैं वाया PYQs, जिसमें हम सारे रिपीटेड डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे. बहुत ही ब्रीफ में टू द पॉइंट रखेंगे सो इट्स रेलेवेंट टू योर एग्जाम. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. इन DSM-5, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हैज बीन क्लासिफाइड इन. नाउ अगर आप डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि DSM में कितनी कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर है एंड उन पर्टिकुलर कैटेगरीज में और कितने डिसऑर्डर्स है. ऑलराइट, क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है जैसे OCD किस कैटेगरी के डिसऑर्डर का पार्ट है. ऑलराइट, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो ऑल द कैटेगरीज एंड द सब डिसऑर्डर्स अंडर इट. So DSM-5 में there are 20 categories of disorders and each category has multiple disorders in it. So up until DSM-4, obsessive compulsive disorder was under anxiety disorders. But DSM-5 से it is under a separate category called obsessive compulsive and related disorders. इसमें और भी disorders आते हैं. Let's discuss those. First is obviously obsessive compulsive disorder, which is characterized by obsessions and or compulsion. Now, obsessions are recurrent thoughts जो ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में आ जाते हैं. And compulsions are recurrent behaviors that you engage in supposedly to get rid of those recurrent thoughts. Alright, then we have body dysmorphic disorder. Body dysmorphic disorder is when an individual is preoccupied with the perceived flaw in their physical appearance. Now this flaw may or may not be actually present, और अगर present भी है then it's so minor that it's not noticeable to the other person. Alright, then we have excoriation disorder. This is also known as skin picking disorder. इसमें individuals अपनी body की skin को pick करते रहते हैं. Why?
because they feel a sense of relief when they do that. Then we have trichotillomania. This is known as hair pulling disorder. इसमें इंडिविजुअल्स अपने बॉडी के रीजन्स के हेयर प्लक आउट करते रहते हैं. व्हाई? अगेन बिकॉज दे फील अ सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन दे डू दैट. देन फाइनली वी हैव होर्डिंग डिसऑर्डर. होर्डिंग डिसऑर्डर इज individuals have a hard time getting rid of their material possessions. अब ये possessions की कोई value हो या नहीं हो, but they feel very hard to get rid of it. All right. Now, disorders of relatively shorter duration, usually under 6 months, is referred to by the term. Now, ये सारे terms का मतलब आपको पता होना चाहिए when you are studying disorders. Now, let's look at those. First is acute. Acute is usually short term, lasting for a period of less than 6 months. It has a very sudden onset and brief course. For example, common cold. Alright, अचानक से हो जाता है and usually 3-4 दिन में सही भी हो जाता है. Then chronic. You must have heard कि so and so has a chronic illness. So chronic is usually long term, lasting for a period of more than 6 months, and it has very persistent or recurring symptoms. For example, schizophrenia. It develops slowly over time and it has very persistent and recurring symptoms. Recurrent is something जो बार बार होता जाए. Alright? कोई चीज हुई, ठीक हुई, वापस हो गई. Then we have episodic. Episodic is occurs in discrete episodes. For example, episodes of depression or mania. एक episode आया, another episode may or may not appear. Alright? So, disorders of relatively shorter duration, usually under 6 months, is referred to by the term acute. Alright? Now, an affective disorder in which a person swings from one mood extreme to another is classified as. Affective का मतलब होता है mood disorder. So mood usually दो poles पे exist करता है. One is mania, another is depression. So mania is extremely elevated mood. All right. Depression is extremely low mood. तो यूजुअली मोड मिडल में एग्जिस्ट करता है, बट फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम मूड डिसऑर्डर्स इट एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम्स. ऑलराइट. और अगर ये एक्सट्रीम्स में भी शिफ्ट करते रहे देन इट इज नोन एज बाइपोलर डिसऑर्डर. ऑलराइट. बाइपोलर डिसऑर्डर के भी वेरियस टाइप्स होते हैं. लेट्स डिस्कस दोज नाउ. So, bipolar 1 is you need to experience at least one manic episode for the diagnosis. Depressive episode may or may not be present. Bipolar 2 में one hypomanic episode and one depressive episode. Alright. हाइपोमेनिया और मेनिया में कोई डिफरेंस नहीं है. तो ओनली डिफरेंस इज द टाइमलाइन. मेनिक एपिसोड के लिए यू नीड एटलीस्ट 1 वीक और लॉन्गर. हाइपोमेनिया के लिए यू नीड 4 days. ऑलराइट. नाउ वी हैव साइक्लोथीमिया सॉरी. इसमें हाइपोमेनिक और डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं. बाइपोलर 1 या 2 के लिए क्राइटेरिया मीट नहीं होता, बट हाइपोमेनिक एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स आर प्रेजेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. Alright. So, an affective disorder in which a person swings from one mood extreme to another is classified as bipolar disorder. Alright. Now,
Given below are two statements. Statement 1, schizophrenic patients with positive symptoms have a better prognosis for recovery than those with negative symptoms. Statement 2, the dopamine hypothesis states that schizophrenia is produced by an undersupply of this neurotransmitter. Before we answer this question, let's understand what schizophrenia is. Schizophrenia comes from the word schizo. इसका मतलब होता है to split. Now, people suffering from schizophrenia split from reality. Alright. उनको पता नहीं चलता असली क्या है और उनके दिमाग में क्या है. And they experience a different number of symptoms जो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज पॉजिटिव सिम्टम्स. पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब कुछ ऐड हो रहा है, बढ़ रहा है. नेगेटिव सिम्टम्स इज कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है. देन साइकोमोटर सिम्टम्स विच इज बॉडी रिलेटेड. ऑलराइट. नाउ पॉजिटिव सिम्टम्स में आ जाते हैं डिल्यूजन्स. डिल्यूजन्स आर योर फिक्स्ड false beliefs. That has no basis in reality. Then we have hallucinations. Hallucinations are कि कोई चीज एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है बट यू फील दैट इट इज. कोई चीज सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, ऑल्दो वो एक्चुअल में नहीं है. Then disorganized thinking, formal thought disorders. Now such people have a very peculiar thinking pattern जिसकी वजह से उनकी स्पीच भी इम्पैक्ट होती है. सो फॉर एग्जाम्पल किसी एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, अचानक से किसी और चीज के बारे में बात करने लग जाएंगे और दोनों चीजों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. ऑलराइट. नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव सिम्टम्स. इसमें आ जाता है फर्स्ट इज पॉवर्टी ऑफ स्पीच. They have very limited speech. Next is blunted or flat affect. Blunted affect is reduced emotional experience. Flat affect is no emotional experience to things. Then social withdrawal. इन्हें किसी के साथ कोई किसी भी टाइप का रिलेशनशिप बनाने या मेंटेन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता. Then psychomotor symptoms. This is body movement related. Now people suffering from schizophrenia have a very odd body movement. और अगर ये extreme हो जाए then that is known as catatonia. Catatonia के भी different types होते हैं. First is catatonic stupor, which means घंटों घंटों तक motionless बैठे रहेंगे एक ही जगह पे, completely zone out हो गए. Then catatonic rigidity. दिस मीन्स अपनी बॉडी मसल्स को बहुत ही स्टिफ और रिजिड करके बैठ जाएंगे. देन वी हैव कैटाटोनिक पोस्चरिंग. अजीब सी पोजीशंस में बैठे रहेंगे घंटों तक. फॉर एग्जांपल अपने सर के ऊपर हाथ रख के बैठे रहेंगे फॉर आवर्स. सो ये सारे थे सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन अगेन. Schizophrenic patients with positive symptoms have a better prognosis for recovery than those with negative symptoms. This statement is true. Why? Because positive symptoms have a better chance of being treated with antipsychotics. Alright. Then, the dopamine hypothesis states that schizophrenia is produced by an undersupply of this neurotransmitter. This is not true. Why? Because the dopamine hypothesis states that schizophrenia is produced by an over, not under supply of this neurotransmitter. Dopamine is your pleasure neurotransmitter. Alright. So जब ये overactive होता है, that is when you experience symptoms of schizophrenia. Alright. So our answer is statement 1 is correct, but statement 2 is false. Now, let's move on to the next question. According to DSM-5, anxiety disorders comprise. Now, ये multiple select question है.
Let's understand what anxiety disorders are. One important thing to note here is that all of us experience anxiety on a daily basis, right? But एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर में बहुत फर्क है. एंजाइटी क्या है? एंजाइटी इज जस्ट एन इमोशनल रिएक्शन टू स्ट्रेस, बट वो डिसऑर्डर तब बनता है व्हेन इट इज एक्सेसिव एंड impacting daily life. All right. Now, DSM में there are 7 anxiety disorders. Let's discuss those. First is separation anxiety disorder. इसमें क्या होता है? Such individuals fear when they are being separated from their attachment figures. कोई भी attachment figure हो सकती है, parents, grandparents, guardians. All right. Next, selective mutism. मतलब एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर सोशल सिचुएशन में नहीं बोलता, वैसे बात करता है, बोलता है, बट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं बात करता. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा घर पे बातचीत कर रहा है अपने पेरेंट्स से, बट स्कूल में जाके एकदम चुप. सो दैट इज सिलेक्टिव म्यूटिज्म. देन स्पेसिफिक फोबियाज. फोबियाज आर किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर सिचुएशन से जब कोई इंसान डरे. For example, claustrophobia, fear of enclosed spaces, या aquaphobia, fear of water. All right, then we have social anxiety disorder. इसमें आ जाते हैं when individuals are scared of social situations. Why? Because they feel कि everyone will judge them, सब उनको judge करेंगे, and they will be very harshly judged by them. All right, so they try to avoid social situations as much as possible. Then we have panic disorder. Panic disorder is recurrent and unexpected panic attacks. All right. Then agoraphobia. Agoraphobia is fear of situations where escape is difficult or help might not be available. So such individuals try to avoid public spaces, open spaces, या फिर कई situations में तो इतना serious हो जाता है that individuals become completely housebound. घर से भी बाहर नहीं निकल पाते. Then we have generalized anxiety disorder. This is characterized by excessive and uncontrollable worry about various life aspects. कोई particular situation से नहीं, but in general, career, family, school, सब चीज की टेंशन होती है. All right. Then match list 1 with list 2. इसमें we have personality disorders and their characteristics, and we have to match. Let's take a look at what personality disorders are. So personality, as we all know, is something that makes us unique from others. All right, it is our way of thinking and seeing the world. But when does it become a disorder? It becomes a disorder when a personality is inflexible, rigid, and harmful to ourselves and others. All right, that is when it becomes a disorder. So DSM में there are total 10 personality disorders, जिनको 3 clusters में divide किया गया है, cluster A, B and C. Now let's take a look at those. First is paranoid personality disorder. Paranoid का मतलब होता है a person जो बहुत शक करता हो किसी पे. So similarly, individuals with paranoid personality disorders are very suspicious of others. उन्हें लगता है everyone is out to harm them. All right. Then we have schizoid personality disorder. Such individuals are so emotionally detached कि उनका किसी भी टाइप का सोशल रिलेशनशिप बनाने का या फॉर्म करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता. All right. Then we have schizotypal personality disorder. Now, such individuals have a very odd or eccentric thinking pattern. All right. तो इसकी वजह से they have very reduced social interactions in their daily lives. Although उनका मन करता है socially engage करने का, but because इनकी thinking ही इतनी अजीब है that वो नहीं कर पाते.
ऑलराइट, देन वी हैव क्लस्टर बी. इसमें आ जाता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर. सो सच पीपल आर वेरी अटेंशन सीकिंग, मतलब उनको आदत होती है बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन, और अगर किसी सिचुएशन में वो सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं है, देन दे एंगेज इन वेरी सुपरफिशियल बिहेवियर. ऑलराइट, देन वी हैव बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ये लोग एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट करते हैं. अगर किसी को पसंद करेंगे उसको भगवान बना लेंगे, और अगर कुछ जरा सा गलत हुआ तो उसको एकदम ही घटिया इंसान बोल देंगे. ऑलराइट, सो दे हैव डिफिकल्टी मैनेजिंग देयर इमोशंस. देन वी हैव नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर. इन लोगों को लगता है दैट दे आर बेटर देन एवरीवन एल्स, ऑल्दो इनकी एक्चुअल सेंस ऑफ सेल्फ बहुत ही कम होती है, बट उसको मास्क करने के लिए दे एंगेज इन सच बिहेवियर. देन वी हैव एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर. Such people have no regard for law and order, rules and regulation. इन सबसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. Then we have cluster C. इसमें आ जाता है avoidant personality disorder. Now इन लोगों को social relationships बनाने तो होते हैं, बट इनको ऐसा लगता है that they are not good enough, और लोग इनको बहुत harshly judge करेंगे. So which is why they avoid such situations. Then we have dependent personality disorder. इन लोगों को कोई ना कोई चाहिए इनका ध्यान रखने के लिए, ये खुद से कुछ भी नहीं कर पाते, सो दे नीड अ फिगर टू टेक केयर ऑफ देम. देन वी हैव ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर. इन लोगों को लगता है दैट दे हैव टू कंट्रोल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ, और अगर वो कोई चीज कंट्रोल नहीं करेंगे देन एवरीथिंग वुड फॉल अपार्ट. ऑलराइट, सो दीज वर ऑल द 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. अब इसको याद करने के लिए यू कैन मेक योर ओन निमोनिक और यूज द वन दैट आई हैव क्रिएटेड. दिस इज प्लीज स्टे सेफ, ऑलवेज बी हैप्पी, नेवर अवॉइड डेली ऑब्लिगेशंस. ऑलराइट, सो P फॉर पैरानॉइड, S फॉर शिजोइड, S फॉर शिजोडिपल, A फॉर एंटीसोशल, B फॉर बॉर्डरलाइन, H फॉर हिस्ट्रियोनिक, N फॉर नार्सिसिस्टिक, A for avoidant, D for dependent, and O for obsessive compulsive. Alright, this makes it easier, no? So with this, we are finally at the end of our session. I hope you enjoyed the video. अगर आपको कुछ भी डाउट हो, you can always reach out to us or drop a comment in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, then do like, share and subscribe to our YouTube channel. You can also scan this QR to join our WhatsApp and Telegram group for daily updates, and follow us on Facebook and Instagram. Thank you.